नमस्कार। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा धमाल मचा रही है। देश के कई राज्यों में थिएटर्स बंद कर दिए गए, वहीं कुछ जगह 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खोले गए हैं, लेकिन बावजूद इसके पुष्पा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सभी 5 भाषाओं यानी कि मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और हिंदी में यह फिल्म हिट साबित हुई है। फिल्म में अल्लू अर्जुन के डायलॉग, बोलने के अंदाज और फाइटिंग सीन को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। भले ही पुष्पा साल 2021 की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही हो, लेकिन क्या आप जानते हैं पुष्पा को फायर समझने वालों ने फिल्म की कुछ गलतियों पर ध्यान ही नहीं दिया। चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं पुष्पा की कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में। पहली गलती, फिल्म में दिखाया गया है कि पुष्पा का खास दोस्त केशव पहले तो वैन का दरवाजा नहीं खोल पाता और फिर अगले ही सीन में नई मारुति वैन चलाकर ले जाता है। अब जरा सोचिए, जिसे वैन का दरवाजा खोलना नहीं आता वो वैन चलाकर कैसे आ सकता है। हुई ना इस सीन में सुकुमार से गलती। दूसरी गलती, अब जरा वो सीन याद कीजिए जिसमें पुष्पा पुलिस से बचते हुए ट्रक उड़ाकर एक गड्ढे में गिराता है। पुष्पा जिस गड्ढे में ट्रक फेंकता है वो गड्ढा सड़क के किनारे ही होता है। तो क्या पुलिस को सड़क किनारे इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा? मान भी लेते हैं कि पुलिस को गड्ढा नहीं दिखा, लेकिन वो सड़क तो कच्ची थी और कच्ची सड़क पर ट्रक के टायर के निशान बनना तो लाजमी है। लेकिन पुष्पा को पकड़ने वाली पुलिस के पास दिमाग कम था, इसलिए वो ट्रक ढूंढने की कोशिश ही नहीं करती, सीधा उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। सोचिए, देखते हुए तालियां तो आपने खूब पीटी होंगी, लेकिन क्या इस लॉजिक पर आपने ध्यान दिया? तीसरी गलती, जब पुष्पा शीनू के साले मोगलिस को पानी में मारता है तो वहां पानी में मोटरसाइकिल भी घुमाता है, जबकि नदी में बड़े बड़े पत्थर मौजूद होते हैं। अब जरा सोचिए, पत्थरों के बीच पानी में बाइक को गोल गोल घुमाना साइंस के किस नियम से होगा? शायद सलमान खान की तरह अल्लू अर्जुन ने भी एक्शन के चक्कर में साइंस की धज्जियां उड़ा दी। चौथी गलती, फिल्म पुष्पा का सबसे बड़ा ब्लंडर है उस सीन में जहां पुष्पा लाल चंदन की लकड़ियों को पानी में फेंकता है। इसी पर पूरी कहानी आधारित है। भारत की लाल चंदन की लकड़ी की मांग सबसे ज्यादा चीन में है। लाल चंदन एक ऐसी लकड़ी होती है जिसका छोटे से छोटा टुकड़ा भी पानी में डूब जाता है। इसकी गुणवत्ता की पहचान भी ऐसे ही की जाती है, लेकिन फिल्म में दिखाया जाता है कि लट्ठे के लट्ठे नदी में तैरते चले जा रहे हैं। फिल्म में दिखाई गई लाल चंदन की लकड़ी फाइबर और फोम से बनी हुई होगी, तभी तैरते हुए चली गई। पांचवी गलती, फिल्म के एक सीन में पुष्पा को ट्रक के बोनट पर बैठकर घूमता हुआ दिखाया गया है। सीन में ट्रक घूमे जा रहा है, लेकिन ट्रक के अंदर जब कोई ड्राइवर ही नहीं है तो ट्रक कैसे घूम रहा है? तो ये थी फिल्म पुष्पा की कुछ बड़ी गलतियां जिन पर शायद ही किसी की नजर गई हो। वैसे आपको बता दें, सुकुमार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इतनी एंटरटेनिंग है कि इसकी गलतियों पर किसी ने गौर नहीं किया। फिल्म में अल्लू अर्जुन के डायलॉग, बाजी और एक्शन को देखकर लोग सब कुछ भूल गए। बताते चले, ये फिल्म थिएटर्स के अलावा OTT पर रिलीज हो चुकी है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आप बताइए, पुष्पा आपको कैसी लगी और ये गलतियां क्या आपने इस खबर से पहले नोटिस की थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। Today, Wikipedia says Allu Arjun is an Indian actor who primarily works in a particular industry, or Rashmika Mandanna is an Indian actress who primarily works. I think there is an insane amount of respect and appreciation for all kinds of films. I have seen that, from the time I have been here, I've seen that we have welcomed all kinds of movies. And I'm not saying about us, I'm talking about the Indian audience. While I speak to you, there's a friend who's an RJ in Punjab who told me that, listen, please tell them that we are excited to watch the movie. I have a 9-year-old niece who told me when Sitima released that, it's Allu versus Sallu. I said, how did you know? So these are things, when you say that am I really, do really people love me that much? There is an insane amount of love maybe which you will get to see with this film. I want to know, do you see the changing shifts in the industries and the respect that is given to each other? Let her speak, then I'll speak. Yeah, both of you. I think there is an extreme, as in the last decade, I think we've seen such a shift in our cinema, in our field. I've just entered the industry in 4 years, but I've seen so much happening before I entered, and when I'm a part of Indian cinema now, and I can't be proud of it. I couldn't have entered a better time. I think this is the perfect time that I'm in the industry, because I see, like you said, the languages are, merging together. We're having pan-India releases.
it's going to be, like Sir said, Indian films rather than South India film or a Bollywood film. It's not going to do that anymore. In a couple of years, I think it's just going to be Indian cinema. Yeah. Probably we're going to go globally, dubbing our film in their languages. So we just need to see the reach. I think we should always experiment with that. But I think it's fascinating and it's super, it's amazing to see all people just appreciate content now. People just want good content. People want good filmmaking, and when you give it, people appreciate it and they make it their own. Absolutely. It's a very interesting. What's your name? Sorry. Nayandeep. Nayandeep. How old are you? I'm 29. You're very mature for your age. I appreciate it. It's a very wonderful question that you asked, by the way. You should see cinema, how it's running, how the trends have been running in the last 10 years. Like I'm saying in the 2000s, it's a very clear gap between the South cinema and North cinema. Let's be honest about it. And then if you see the entire 2010s, the bridges, there's been beautiful bridges, thanks to people like Manish ji, who have bridged those gaps. And now everybody's getting familiar with each other's cinema. And I'm telling you, from the next decade onwards, from the 2020s, the lines will be so blurry that it will not matter where it comes from. It is only the content that will matter. There will not be South actors, North actors. It will all be about Indian cinema growing. And I'm telling you, with the wonderful platforms that have opened like OTTs, there's so many set of new filmmakers, directors, actors, technicians. This has opened up amazing horizons for us in entertainment industry. And we as Indian entertainment industry, not just cinema, we as Indian entertainment industry are going to be a very huge, or probably the biggest players in the next decade. And I'm very positive as a country we will go up. Absolutely. Thank you. Absolutely. We'll Rashmika, take one last question. Yeah. I also had one question for Yeah, I'll Rashmika. come. Small Sure, one. sorry. Yeah, come. So Rashmika, your movies, Hindi movies are also releasing, and there is a pan-India approach to all the films that you've done, whether it's a Geeta Govindam also and Dear Comrade, which people have watched. How do you see, I have met people who are from South, now that we are meeting quite often. There's a sense of warmth, and there's a sense of imagery on screen. And it's very different, How do you see those two worlds mixing when you do films like these? As in, I think for us, for me, I can speak only for myself, and for me, as much of fame and the glamour there is out there, for me, it's me doing good work and good content and me doing the best I can in a film that I'm a part of.